Enzymes are known as biocatalyst. Catalyst is an agent which is speeding up the rate of reaction. For example, let us take a reaction A is converted to B. Okay, this reaction is happening one molecule in 1 minute. Just imagine this is happening in such a speed that one molecule in 1 minute. In presence of an enzyme or in presence of a catalyst, enzyme या catalyst, the reaction goes to such a huge level like 10 to the power 9 molecule in 1 minute. See the speed of reaction. So in the presence of enzyme, in the absence of an enzyme, it was acting one molecule per minute, but now it has been increased to 10 to the power 9 molecules per minute. That means enzyme can speed up the rate of reaction to such a higher level, higher rate, means this much speed they can increase. And we have to remember all the enzymes belong to protein, or all the enzymes are protein. So today we have to see some examples of proteins. In the aerated drinks like soda or whatever you are taking cold drinks. दिस कोल्ड ड्रिंक्स अगर आप ओपन करते हैं तो उसमें से बहुत सारे फिजिंग आउट एयर मोलिक्यूल्स मिलेगा दैट इज एक्चुअली कार्बन डाइऑक्साइड. सो हमने ये कार्बन डाइऑक्साइड को पानी में मिलाया बाय गिविंग ह्यूज प्रेशर. सोडा मेकर आपने देखा होगा उसमें ह्यूज प्रेशर में हम लोग कार्बन डाइऑक्साइड को फोर्सफुली पानी में मिलाया जाता है. इट रिक्वायर्स ह्यूज एटमॉस्फेरिक प्रेशर and a different condition to actually mix carbon dioxide in water. It is very difficult to mix naturally carbon dioxide in water. अब हम देखते हैं एक एंजाइम हमारे बॉडी में है दैट एंजाइम का नाम है कार्बोनिक एनहाइड्रेस. Now please remember all the enzymes they have a suffix ASE. This ASE will help you to identify that as enzyme. Carbonic anhydrase is an enzyme which does the function of mixing or dissolving carbon dioxide in water. In the presence of carbonic anhydrase, you can see the reaction of solubilizing carbon dioxide in water or dissolving carbon in water is increasing to 10 to the power 8 times. It can enhance 10 to the power 8 times. Another एक enzyme है जिसका नाम है urease. Urease can accelerate up to 10 to the power 12 times. That means अगर एक molecule एक मिनट में हो रहा है imagine, तो वो 10 to the power 12 molecules in a minute देंगे. That much speed or that much rate enhancement can be done through enzymes. Now how these enzymes are able to do this? Enzymes इतने स्पीड पे ये काम कैसे कर पाते हैं वो हम देखेंगे. Before going to that, just we will discuss some of the properties of enzymes. First one, they are highly specific in the sense we had a discussion on hope you remember alpha glucose, beta glucose. Okay, अल्फा ग्लूकोज बीटा ग्लूकोज में चेंज इतना ही है, एनोमरिक कार्बन में हाइड्रोक्सिल ग्रुप का अरेंजमेंट डिफरेंट है बस. वी नो अल्फा ग्लूकोज की चेन है स्टार्च, बीटा ग्लूकोज की चेन है सेलुलोज. स्टार्च को डाइजेस्ट करने वाले एंजाइम्स उसको डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. सी दैट मीन्स चेंज बहुत छोटा है. एक हाइड्रोक्सिल ग्रुप एंड हाइड्रोजन के पोजीशन अरेंजमेंट में डिफरेंट है. दैट इटसेल्फ इज इनफ फॉर द एंजाइम्स टू नॉट टू डाइजेस्ट सेलुलोज. छोटा डिफरेंस भी वेरी इंपॉर्टेंट है फॉर द एंजाइम्स. सो दे आर हाईली स्पेसिफिक. और एंजाइम्स जिसके ऊपर एक्ट करते हैं उसको हम सबस्ट्रेट कहते हैं. Actually, enzymes are specific to substrate
Enzymes are specific to pH. Okay, it's environment. अगर हमने pH change किया तो enzymes will not work efficiently. Enzymes are specific to temperature. All these specificity are the property of enzymes. Enzymes act like lock and key. We know a particular key can only be used to open a particular lock. Lock and key, they are highly specific. The same way, one enzyme is specific to its substrate. Schematically, we can show like that. देखो ये है enzyme and substrate. This substrate can attach here. There are different other types of substrate. They cannot attach over this because they have a special lock and key mechanism which is showing their specificity. Highly specific to substrate, highly specific to the temperature, highly specific to the pH. An enzyme which catalyzes oxidation of D-alanine cannot oxidize L-alanine. ये भी जो D कॉन्फ़िगरेशन को कर रहे हैं एंजाइम वो L कॉन्फ़िगरेशन को डाइजेस्ट नहीं कर पाएंगे. That much specific means arrangement of hydroxyl and hydrogen group भी different है molecule में. The enzymes cannot act. Means they are highly specific. Second is enzymes able to enhance the reaction at ordinary room temperature. That's right. They are able to carry out their activity at room temperature. अदर कैटलिस्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक भी है और ऑर्गेनिक भी है. इनऑर्गेनिक के अंदर कुछ फाइनली चॉप्ड प्लैटिनम और फाइनली चॉप्ड iron. All these things are acting as catalyst. Inorganic catalyst requires higher temperature like 500 degree Celsius and high pressure to catalyze certain reactions, whereas our enzymes able to do the same reaction within room temperature. This is one of the advantages of enzymes. Now third property is enzymes and their activities can be regulated. Enzyme can be regulated. This is one of the important properties of enzyme. I'll tell you what type of regulation they have. Suppose an enzyme is converting a process A plus B gives C. C का हमारा सेल के अंदर का लिमिट है 100 molecules. That means C हमारे सेल में होना चाहिए 100 molecules. हमेशा 100 molecule आना चाहिए. Who is catalyzing this reaction? Let us take it as E the enzyme. Suppose the amount comes down 99, 98, 97, likewise it is coming down. Then the enzyme will act and they will again maintain the number to 100. And again if the number increases 100 के ऊपर चले जाता है, then the enzyme will stop its activity. If increases the amount product तो enzyme अपने activity बंद करेंगे. If decreases the amount then enzyme will activate. मतलब एक type of regulation हो गया. Enzymes can be regulated. If excess of product is made which is against cell economy, the enzyme is made to slow down the reaction. Okay, and this is known as feedback regulation. इसको बोलते हैं feedback regulation. So enzymes can slow down the reaction if the product is excess formed. Enzymes will enhance the reaction if the product is low in concentration. That means the enzyme's action can be regulated as per the requirement of that particular product in the cell. If it is a inorganic catalyst, that they cannot be regulated. Once you add the inorganic catalyst in any of the reaction, they will convert all the substrate to product. There is no such feedback interaction and all. Whereas enzymes will be able to do the reaction
or able to increase the rate of reaction if the product is lesser in amount, and they will reduce the speed of reaction if the products are formed excess. So एक feedback regulation है enzyme का. Clear? Next topic is catalytic power. Are they able to do this? Rate enhancement. वो एंजाइम इतना ह्यूज लेवल पे जो 10 to the power 12 times और 10 to the power 8 times, इतने ह्यूज लेवल पे हाउ दे आर एबल टू कैरी आउट द रिएक्शंस, एंड उन्होंने और व्हाट इज द साइंस बिहाइंड इट, हाउ आर दे एबल टू increase the rate of reaction. Before that, let us take this as an enzyme. At first, enzyme and its substrate, this is substrate, combines to form enzyme substrate complex. So this enzyme substrate complex will be converted to enzyme product. ये product में convert हो गया. And then enzyme and product will get separated. This is how the reaction happens. ये है enzyme catalyzed reaction का common procedure. Enzyme combine with substrate. It can only combine with the substrate which is suiting to its what do you call characteristics. फिर वो एंजाइम सबस्ट्रेट एक पर्टिकुलर कॉम्प्लेक्स बनेगा और उस एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स ने एंजाइम प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स बन जाएगा. फिर प्रोडक्ट एंजाइम से रिलीज होगा, एंजाइम वैसा के वैसा रहेगा और प्रोडक्ट बन गया. नाउ as a result of this, what happened here, this substrate has been converted to product. How they are able to do such huge rate enhancements, वो कैसे कर पा रहे हैं? There are three ways discussed here. First way देखते हैं. When the substrate diffuses to a special site known as active site, substrate have to diffuse and fit into the active site of enzyme. एक्टिव साइट ऑफ एंजाइम में जाके उसको फिट करना है सबसे पहले. When they come and arrange here in its active site में आके अरेंजमेंट होंगे, that arrangement will help the substrate to form product. That means, for example, let us take, हमें दो मॉलिक्यूल कंबाइन होके एक पर्टिकुलर स्ट्रक्चर बनना है. दिस इज आवर रिएक्शन. इसको हम दोनों को स्पेस में रखेंगे तो वो अपने आप को बहुत तरीके से टकराएंगे, टकरा के एक पर्टिकुलर टाइम में वो दोनों आएगा, एक प्रॉपर ओरिएंटेशन में आएगा, देन दे मेक द बॉन्ड. इफ दिस इज कैटलाइज्ड बाय एन एंजाइम इन दोनों को एक पर्टिकुलर जगह पे और एक्टिव साइट में डिफ्यूज करवा के फिट कर देंगे. जैसे ही वो फिट हो गया अपने एक्टिव साइट में, फिर जल्दी से जल्दी उनके बीच में बॉन्ड बन सकते हैं. दैट मीन्स दे आर करेक्टली ओरिएंटेड. द सबस्ट्रेट्स आर करेक्टली ओरिएंटेड इन द एक्टिव साइट. दैट लीड टू प्रोडक्ट फॉर्मेशन. तो एक मैजिक यही कर रहे हैं एंजाइम. एंजाइम्स आर allowing the substrate to orient properly when they get attached to their active site. एक्टिव साइट में आने के बाद उस सबस्ट्रेट को एक प्रॉपर ओरिएंटेशन मिल रहा है. प्रॉपर ओरिएंटेशन मतलब प्रॉपर एक अरेंजमेंट मिल रहा है, जल्दी से जल्दी उनमें से प्रोडक्ट बन सकते हैं. नाउ विल सी सेकंड क्या है. Substrates are also distorted by binding to the enzyme active site, and this causes certain bonds to break easily and new bonds to form, which lead to product formation. I'll tell you this. When the substrate bind to active site, substrate get distorted. Distorted मतलब उसके जो नॉर्मल स्ट्रक्चर है वो स्ट्रक्चर थोड़ा सा बदल जाता है, क्योंकि उसको अपने आप एक्टिव साइट में फिट होने के लिए थोड़ा सा मोड़ना पड़ेगा.
जब वो मुड़ेंगे उसके अंदर का बॉन्ड आराम से ब्रेक होगा और नए बॉन्ड जल्दी से जल्दी बनेगा एंड प्रोडक्ट इजीली बनेगा। यदि हम लोगों ने उसको एंजाइम के साथ अटैच नहीं कर पा रहे, सपोज एंजाइम इज नॉट देयर इन द रिएक्शन, तो दैट पर्टिकुलर मॉलिक्यूल हैव टू बेंड इट्स ऑन, distort its on. It takes a lot of time. That means in the active site the substrate get distorted and that allow to form product. तब जल्दी से जल्दी प्रोडक्ट बनने का चांस बन रहा है। Clear? An enzyme is made up of chain of amino acid. We all know amino acid chain forms protein, and that protein is actually if it is an enzyme, so enzyme is containing a chain of amino acids. Now let us draw enzyme like this. देखो ये है हमारा enzyme, enzyme की active site जो इसके बीच वाला जो portion है. So in the active site we can see certain amino acids can do acid base catalysis. Acid base catalysis means they can donate H plus, okay, as well as they can accept H plus, or they are able to carry out redox reactions. इस जगह पे यदि हमारा सपोज हम सबस्ट्रेट आ रहा है तो these redox reaction will force the substrate molecule to undergo certain reactions and that lead to product formation very easily. Now let us see what are the use of enzyme or uses of enzymes in biotechnology. Some examples like we all know penicillin. आपको पता है ना पेनिसिलिन का यूज क्या है? पेनिसिलिन इज यूज्ड एज एन एंटीबायोटिक. जब हमने इसके रिसर्च किया तो पता चला पेनिसिलिन इज एक्चुअली ए इनहिबिटर है. इट इज एन इनहिबिटर. अब किसके इनहिबिटर है? एन एंजाइम दैट इज ट्रांसपेप्टिडेज. Transpeptidase is an enzyme which is helping in the cell wall formation in bacteria. आपको याद है बैक्टीरिया में जो सेल वॉल है वो पेप्टिडोग्लाइकन बनने में ट्रांसपेप्टिडेज का रोल है. एक्चुअली दैट इज एक्चुअली हेल्पिंग इन मेकिंग पेप्टिडोग्लाइकन. तो अगर हमने इस एंजाइम को रोक दिया तो that enzyme will stop its action, so पेप्टिडोग्लाइकन लेयर नहीं बनेंगे. अगर पेप्टिडोग्लाइकन लेयर नहीं बनेंगे हमारे इम्यून सेल्स कैन इजीली किल बैक्टीरिया क्योंकि उसके एक प्रोटेक्शन चला जाता है. So while taking antibiotic penicillin, this penicillin will go and block transpeptidase activity of newly formed. और जैसे ये बैक्टीरिया डबल हो रहे हैं, मल्टीप्लाई हो रहे हैं, उनको बहुत सारे सेल वॉल बनने की जरूरत है. तो ये सेल वॉल बनने का जो प्रोसेस है वो स्लो डाउन हो जाएगा क्योंकि ट्रांसपेप्टिडेज काम नहीं करेंगे क्योंकि पेनिसिलिन विल गो एंड ब्लॉक ऑल द ट्रांसपेप्टिडेज. जैसे ही ट्रांसपेप्टिडेज ब्लॉक होगा सेल वॉल इजीली नहीं बनेंगे. सेल वॉल इजीली नहीं बनते तो हमारे इम्यून सेल्स उसको आराम से खत्म कर सकते हैं. सी एक्चुअली एक एंजाइम को टारगेट कर रहे हैं हम लोग to kill that bacteria. In majority of pharmaceutical research, pharmaceutical companies वो क्या करते हैं? They are finding inhibitors. उनका काम है to find inhibitors. कौन से inhibitors को find करना है? अगर कोई पैथोजन है, suppose there is a pathogen and इस pathogen is having various enzyme. इनमें से स्पेशल कोई एंजाइम होगा जो आप स्टॉप करेंगे तो उस पैथोजेनिक ऑर्गेनिज्म इजीली मर जाते हैं. तो उसके इनहिबिटर्स ढूंढ रहे हैं. एक्चुअली उस इनहिबिटर्स को ढूंढने के लिए हमें क्या होना, किसका एक्चुअली इंफॉर्मेशन होना पड़ेगा? वो इनहिबिटर एक्ट करने वाले एंजाइम्स के इंफॉर्मेशन हमारे पास होना चाहिए. तो वी स्टडी एंजाइम्स ऑफ दिस पैथोजन so that we can target those enzymes and we can kill those pathogen. So this is why enzymes are studied.
nowadays what happens now, we are studying the active site of enzymes. हम लोग इस एक्टिव साइट्स पढ़ते हैं किसका, एंजाइम्स का, सो दैट उसके 3D स्ट्रक्चर हमारे पास आ जाएगा. देयर आर कंप्यूटर्स सॉफ्टवेयर्स विच हेल्प अस टू monitor the three-dimensional structure of active site belong to a protein. And if you know the 3D structure, we can create certain chemicals. We can form certain chemicals which will suit to this 3D structure, and they will block the activity of that enzyme, and they will that will lead to the death of that organism. Thereby हमारा disease cure हो जाता है. So research is done to develop certain chemicals which is known as drug designing. इसको बोलते हैं drug design. So drug designing, okay, antibiotic development, इन सब में एक्चुअली एंजाइम्स के और उसके एक्टिव साइट का एक्सटेंसिव स्टडी करते हैं. एंड some enzymes are used in, we can say many enzymes are used in industries, okay, or many enzymes are used as tool for genetic engineering. Tools in genetic engineering, हमने इस फर्स्ट चैप्टर में बताया था व्हाट इज जेनेटिक इंजीनियरिंग. Actually, combining two or more pieces of DNA from two or more different organisms and making certain qualities. This is known as genetic engineering. For this joining, for cutting DNA, okay, to cut DNA, to join DNA, स्पेसिफिकली ये सब काम करने के लिए वी नीड स्पेसिफिकली और वी नीड स्पेसिफिसिटी, बिकॉज कहीं और काटेंगे तो छोटा सा चेंज भी बहुत बड़ा रिजल्ट देंगे. तो हमें एक्जैक्टली वहीं पे काटना है, तो वो पर्टिकुलर जगह पे नैनो मॉलिक्यूल को काटने के लिए वी यूज एंजाइम्स. To cut DNA, to join DNA and all, we use enzymes. Some examples: restriction एंडोन्यूक्लियस. देखो ये ऐसी है, डायग्नोसिस करने के लिए हम टेस्ट करते हैं. अभी भी कोविड है या नहीं उसको आइडेंटिफाई करने के लिए हम लोग एंटीजन टेस्ट करते हैं, एंटीबॉडी टेस्ट करते हैं. तो बहुत सारे ऐसे टेस्ट हम लोग करते हैं. तो ये टेस्ट करने के लिए, ओके, डायग्नोस्टिक टेस्ट के लिए एंजाइम यूज होता है. एलिसा एक टेस्ट का नाम है. उस टेस्ट में हम लोग एंजाइम्स यूज करके टेस्ट करते हैं. ओके, देन किसी डिसीज को एक्चुअली एज ए थेरापी उसको क्योर करने के लिए, टू क्योर सर्टेन डिजीज वी यूज एंजाइम्स. एक एंजाइम है स्ट्रेप्टोकाइनेस. दिस इज यूज्ड इन स्ट्रोक. स्ट्रोक आपको पता है ना, स्ट्रोक एक डिजीज है. उस डिजीज को ट्रीट करने के लिए हम लोग स्ट्रेप्टोकाइनेज एंजाइम यूज करते हैं. ओके, इन इंडस्ट्रीज यूज होते हैं. बहुत सारे इंडस्ट्री में एंजाइम्स का यूज है. लेदर इंडस्ट्री, मीट इंडस्ट्रीज एंड ऑल दोज इंडस्ट्रीज में वी कैन सी द एंजाइम्स यूज करते हैं. मीट टेंडराइजिंग, मीट टेंडराइजिंग मीन सॉफ्टनेस करने के लिए मीट को. लेदर इंडस्ट्री में, टेक्सटाइल इंडस्ट्री में, हर जगह पे एंजाइम्स का यूज है. डिटर्जेंट इंडस्ट्रीज में यूज है. सो ऑल टुगेदर वी कैन से दैट एंजाइम्स का फंक्शन हमें जरूरी है ताकि उसके एग्जैक्ट स्ट्रक्चर हमें मालूम है तो हम उसको यूज कर सकते हैं कहीं पे भी, एज ए industry enzyme, as a treatment for diagnosing certain disease, for doing recombinant DNA technology. In all these purpose we need to know the exact structure and the activity of enzymes. That's why we learn enzymes in biotechnology.